Okay, so specifying the invoker rights means when you are invoking the procedure. Invoking means what? When you executing the procedure, what are the rights you have to give? The create or replace procedure, art department. Then we are defining ID and name, authentication ID as current user is, begin insert into department. Then we are passing ID and name and two values null. So these are the invoker rights we are performing. For giving a invoker rights, we are defining here AUTHID current user. So for the current user, you are passing the authentication. The current user can work with, or the current user can invoke your SQL statement. Okay. तो यहाँ पर जो authenticate AUTHID current user, ये आपका क्या है ना, जो ऑथराइजेशन है इस जो करंट यूजर जो प्रोसीजर बना रहा है, तो वही यूजर ही आपका वो प्रोसीजर को कॉल कर सकता है. Autonomous transaction. So what is that autonomous transaction? A transaction is a series of statements doing a logical unit of work that complete or fail as an integrated unit. Means when you give a money to somebody, another person will get. Means credit for a transaction, if credit is happened, that particular credit, debit is also happened. If in one part credit is happened, but in another part debit is not happened, so in that cases, it is not called as a complete transaction. A transaction is a series of statements along with logical unit of work that complete or fail as integrated unit. Often one transaction starts the another that may need to operate outside of the scope of the transaction started. That is an existing transaction. A required independent transaction may need to complete or roll back the changes. Since the Oracle 8i autonomous transactions were added to make it possible to create an independent transaction. An autonomous transaction is an independent transaction started by another main transaction. Okay, so autonomous transaction is what? It is started by another transaction. And autonomous transaction is also called as when a transaction is complete, that means what? One is credit, another is debit. Then that is called the transaction. So when one transaction starts, another that may need to operate outside of the scope of the transaction, that is started. That is an existing transaction. A required independent transaction may need to commit or roll back changes without affecting the outcome of the starting transaction. For example, in a stock purchase transaction, the customer information must be committed regardless whether the overall stock purchase is complete. Okay. ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? अगर आपका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा, उसके बाद डेबिट होगा, तो क्रेडिट और डेबिट अगर होता है तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन. ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? मैं सपोज एक एग्जांपल यहाँ पर दिया, जो स्टॉक मार्केट का जो परचेज करना है, स्टॉक मुझे परचेज करना है. सपोज एक एक जगह पर क्या होता है, आप क्या करते हो ना, फ्लिपकार्ट अमेजन में कोई भी चीज आप परचेज करते हो. ओके, तो आप उसको क्या करते हो, बास्केट में ऐड करते हो. लेकिन क्या होता है, बिफोर यू आर गो फॉर ए ऑर्डर, देन इट इज आस्किंग फॉर यू साइन इन और साइन अप. ओके, तो आप साइन इन और साइन अप करते हो तो उस आपका इंफॉर्मेशन क्या होता है, स्टोर हो जाता है. अगर आप ऑर्डर भी नहीं करते हो तो आपको मैसेज भेजेगा दैट यू आर ट्राइंग टू परचेज दैट आइटम बट somehow you are not purchase it, but now we are having a discount, or what is the problem, you ask to our customer care. तो एक ऑप्शन और मैसेज आपको बार बार आता है फॉर देयर मार्केटिंग पर्पस.
तो दैट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन. मतलब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, you are choosing an item and you are logging it, but you are not ordered, but still your personal information has to. Okay, so that thing is called as your autonomous transaction. So it is called as the independent transaction. Suspend the calling transaction until the autonomous transaction are completed. Because autonomous transaction is what? Independent. It is not dependent to the other transaction. But in a normal transaction, what happens? It is dependent. Credit or debit, it is dependent, so that it is successful. जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, आपका मनी डिडक्ट होगा बैंक में, तभी जाकर आपका रिचार्ज होगा, ऑनलाइन पेमेंट. It is are not nested transaction. It is not a nested transaction. Nested transaction मतलब एक ट्रांजैक्शन के अंदर दूसरा ट्रांजैक्शन होगा. मतलब अगर आपका मनी बैंक से कटेगा तभी जाकर आपका मोबाइल रिचार्ज होगा. अगर आप लॉन्ग टर्म मोबाइल रिचार्ज करते हो तो आपको सपोज 5 GB डाटा का ऑफर देता है. सो दैट इज व्हाट दैट इज कॉल्ड एज द वर्ड नेस्टेड ट्रांजैक्शन. अगर मैं एक साल का रिचार्ज करता हूँ, सपोज मुझे 700 सपोज 5 GB का डाटा आई विल गेट इन ए फ्री ऑफ कॉस्ट. So that is called as the what? Nested transaction. If I do, then I will get. Do not roll back if the main transaction roll back. So if the main transaction is roll back, it is not roll back the transaction. It enables the changes to become visible to the other transaction upon a commit. Are started and ended by the individual subprogram and not nested or anonymous PLSQL block. So it is started and ended by individual subprogram and not by nested anonymous PLSQL block. Okay. So it is start and ended by the individual subprogram. Because it is independent, so it is start and end by the individual subprogram. The feature of this autonomous transaction exhibit the following feature. Although called within the transaction, autonomous transaction are independent of their transaction. It is independent of their transaction. That is, they are not nested transaction. It is not called as a nested transaction. If the main transaction roll back, autonomous transaction do not. Changes made by an autonomous transaction become visible to the other transaction when the autonomous transaction is coming. With their stack-like functionality, only the top transaction is accessible at any given time. After completion of autonomous transaction is popped and calling the transaction is resumed. There are no limit other than resource limit on how the autonomous transaction has been recursively called. So recursively you can call it. Recursively means repeatedly you have to call it, your autonomous transaction. There is no limit on that. Autonomous transaction must be explicitly committed or rollback, otherwise an error is written when attempting to the return of autonomous block. You cannot mark a nested or anonymous PLSQL block as autonomous. Okay, the nested anonymous block you cannot declare as a autonomous. So here the two tables were created. One is create table uses, create table tax, card ID, location, account ID and amount. Then we are defining a procedure. यहाँ पर एक procedure मैंने define किया. Procedure का नाम हो गया log uses, then card ID and location.
और ये जो प्रोसीजर है जो प्राग्मा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन ये यूज करेगा. देन बिगिन insert into users table, insert into users table value, card id and location, then commit. Okay, so we are creating a procedure which is used to inserting a record in users table. Okay, users table में क्या वैल्यू देगा ना, कार्ड नंबर और लोकेशन, कार्ड आईडी एंड लोकेशन. देन और एक प्रोसीजर है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर बैंक ट्रांजैक्शन, कार्ड नंबर एंड लोकेशन, insert into txn value. So when I call the bank transaction, when I call the procedure bank transaction, it will insert the record into the txn table. Okay. Then when I call the bank transaction procedure, we call the log uses procedure here. Log uses, then card number and location. तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो इंसर्ट करेगा txn टेबल में, एंड लॉग यूजर प्रोसीजर, एक प्रोसीजर के अंदर में दूसरा प्रोसीजर मैंने कॉल किया. अभी आप देखो मैं किसको कॉल करूंगा, मैं कॉल करूंगा बैंक ट्रांजैक्शन को. मैं यहाँ पर कॉल किया. जब मैं बैंक ट्रांजैक्शन को कॉल किया, यहाँ पर पैरामीटर पास किया 500 and 2000, मतलब कार्ड नंबर एंड लोकेशन. तो कार्ड नंबर लोकेशन यहाँ पर स्टोर हो गया, और आपका जो टैक्स में डाटा स्टोर हो गया 9001 and 1000, और ये जो कार्ड नंबर एंड लोकेशन यहाँ पर आकर स्टोर होगा, यहाँ से आकर यूजर्स टेबल में स्टोर होगा. देखो कितना इनडायरेक्टली यहाँ पर स्टोर हो रहा है. अभी आप देखो मैंने सिर्फ कहाँ पर किसको कॉल किया, बैंक ट्रांजैक्शन को कॉल किया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर यूजर्स टेबल में डाटा इंसर्ट हो जाएगा. $50 and 2000 यहाँ पर टैक्स टेबल में डाटा स्टोर हो जाएगा. So it is stored in the two table. Understood? Sir, last portion authentic ଏଠି ମୁଁ କଣ କଲି, କେମିତି store ହଉଛି authentic କହିଲେ. First I call the bank transaction. Bank transaction is a procedure, and I call this bank transaction procedure. As it is contain a parameter card number and location, so I have passed the value 50 and 2000. So 50 and 2000 value is stored here. Okay, so from 50 and 2000 when it is stored, then it is inserted. When I call this bank transaction, the parameter is stored here. तो यहाँ पर पैरामीटर स्टोर हो गया. ये जो पैरामीटर वैल्यू कहाँ पर आएगा, ये जो लॉग यूजेस जो प्रोसीजर है वहां पर स्टोर हो जाएगा. कार्ड नंबर एंड लोकेशन ये वेरिएबल यहाँ पर डिपेंड किया है. तो जब मैं बैंक ट्रांजैक्शन का कॉल करूंगा, ऑटोमेटिक क्या होगा ना, जो txn टेबल है वहां पर वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा. तो txn टेबल में जो वैल्यू इंसर्ट हुआ यहाँ पर लिखा है. अच्छा, ये जो दो वैल्यू आप पास किए हो 50 and 2000, वो कहाँ पर जाएगा, लॉग यूजेस प्रोसीजर को कॉल किया गया है, तो लॉग यूजेस प्रोसीजर को चला जाएगा. यहाँ से आ गया, यहाँ से वैल्यू कहाँ पर अगर स्टोर होगा, यूजेस टेबल में, यहाँ पर हो गया इंसर्ट इनटू यूजेस वैल्यू. तो ये दोनों वैल्यू में यहाँ पर स्टोर हो गया. क्लियर? Yes, sir. Then next is using no copy hint. It allows the PLSQL compiler to pass out and in out parameter by reference rather than by value. It enhances the performance by reducing the overhead when passing the parameter.
what it actually means. It allows the PLSQL compiler to pass out and in out parameter, to pass the value out and in and out, means you are giving a value and getting a value. Okay, by reference rather than by value enhance the performance by reducing the overhead when passing the parameter. Okay, it is an important point. It is pass the value by reference and enhance the performance by reducing overhead when passing a parameter. So you are not directly pass the value. You are passing the value through a reference. That means what happened? Like if you want to go somewhere for an official purpose, to sending a document, so there is a need of what need is what, that you have to take the document and you go and deliver it. But in place of personally deliver it, you take this information and by courier or by postal you send it. Means through the reference you pass the value. So your headache is over. Reference is also like that. Like suppose you are not attending the class today. Okay, and for your reference I store this class as a video and I send it you. It's just like a live video. Other people are interacting, but you are not interacting there. So it is available for your reference only. So that you can say it is what? No copy hint. By using no copy hint, it is helping you what? In place of passing actual value, you pass the value through a reference. By default, Sir, benefit the benefit ଟା author ଟିକେ ବୁଝେଇବେ ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ଏଇଥିରେ ବୁଝି ପାରିଲିନି benefit କଣ ସେ କୋରିୟର वाला ଜିନିଷ ତ ବୁଝିଲି benefit କେମିତି ହେଲା but ଏଇଥିରେ କେମିତି benefit ହଉଛି using a reference ମାନେ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମେଟିକାଲି ତ हाँ मतलब हाँ प्रोग्रामेटिकली रे मतलब केमिति माने एतर मतलब कौन कहि परिबे मतलब तर यूजफुलनेस केमिति होबो हाँ हाँ ठीक है एग्जांपल दिखाओ माने p tab in and out no copy emp tab type. There is a way of defining no copy. Okay, and what is the benefit? By default the in parameter is passed by reference. When you pass the value is going and stored in a variable. The pointer to in actual parameter is passed to the corresponding formal parameter. So both the parameter reference the same memory location, which hold the value of the actual parameter. The out and in out parameter are passed by value. The value of the out and in parameter is copied into the corresponding formal parameter. Achha, in the case of in, you pass the value through a reference. रेफरेंस कैसे होगा? सपोज आपका पैरामीटर आप लिए हो एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी, एक प्रोसीजर. जब मैं प्रोसीजर कॉल कर रहा हूं तो पहले मैं सैलरी को पास किया, दूसरा में मैं आईडी को पास किया, लेकिन आपका पोजीशन क्या है? आईडी एंड सैलरी. बट व्हेन आई पास द वैल्यू आई पास सैलरी फर्स्ट देन आईडी. So in that cases I am giving a reference. Okay, like we are using a arrow mark na. If you remember it, we are using a arrow mark. E underscore ID arrow mark then value.
So first we passing salary, arrow mark then value, then EID, arrow mark then employee. Okay, so it is the way of passing the value in a reference. मतलब आपका पहले था आईडी, दूसरा है सैलरी, बट जब मैं प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूं तो ये रेफरेंस में पहले सैलरी को पास कर रहा हूं, उसके बाद आईडी को पास कर रहा हूं. The out and in out parameter are passed by the value. आईडी और सैलरी है तो आपको जो वैल्यू भी पास करना है आईडी और सैलरी में पास करना पड़ेगा. The out and in out parameter are passed by the value. The value of the out and in out parameter, out and in out actual parameter is copied into the corresponding formal parameter. Then if the corresponding exists normally, the value assigned to the out and in out formal parameter are copied into the corresponding actual parameter. Copying the parameter that represent a large data structure, such as collection, record, instances, and object type, with out or in out parameter slow down the execution. Okay, so here, when you pass the value, at every time when you call the procedure, you have to pass the value. So that is a header. So in place of calling the value every time, you pass the value in the form of, means you pass the value and store in the memory. तो आपको क्या होगा ना, बार बार वो वैल्यू का यूज नहीं करना पड़ेगा. Okay, that is called the no copy hint.